बैक एंड बाइसेप्स। अरे वो नहीं बे, आज ऑन द कॉन्ट्रेरी हम दोनों लेट आए हैं, रवि पहुंच गया होगा, पक्का सुनाने वाला है। गाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है। आई थिंक वो भी नहीं आया, तो हम लोग लेट है नहीं। आज हमारा स्प्लिट जो है विल डू बैक एंड बाइसेप्स। टुडे इज गोना बी अ पुल है ना, नहीं सॉरी पुश है। अबे आज पुल हुआ कल पर, वी आरंट फॉलोइंग अ पुश पुल। तो वही बैक एंड बाइसेप और चेस्ट एंड वो पुश पुल। बैक एंड बाइसेप इज पुल, यू आर पुलिंग वेट अवे फ्रॉम द एंड चेस्ट एंड ट्राइसेप्स पुश। हां चेस्ट एंड ट्राइसेप्स पुश पुल ही कर रहे हैं हम लोग। फिर पुश में आई थिंक लोग लेग्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब मेड अप प्लान्स जिसमें उन लोगों ने लेग्स भी इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। आई थिंक इट्स मोस्टली फॉर पीपल हु वांट टू डेवलप लेग्स और समथिंग। इट्स नॉट दैट हमारे लेग्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। नहीं है भाई, एवरेज अबव एवरेज यस। True champion. So आज हम लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ वॉल्यूम वी गोना डू 1 rep max। तो देखते हैं, लास्ट टाइम आई गेस वी डिड 130 134 135 6 reps I think max. 6 reps, yeah, 4 So to 6 we're gonna exceed that weight and do this 1 rep today. Let's see how it goes. I'm a true champion. I'm a true champion. I'm a true champion.
हमारा आज बैक एंड बाइसेप था। आज अनफॉर्चुनेटली आज मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। आई गॉट माई फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन टुडे। बिफोर वी एवर स्टार्टेड व्लॉगिंग, उसके पहले हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर वन मसल, वी यूज्ड टू हिट एवरीथिंग। पहली बात Initially we used to like do compound exercises, we used to do compound exercises to build strength, followed by particular muscles that we used to hit, like chest मार लिया या फिर bicep मार लिया। ever since कि हमें time slots मिलने लग गए हैं, we have started doing just one body row split. Technically not as effective, लेकिन time के हिसाब से it's really the only choice we had. Do let us know if this workout works for you guys as well and do try it out. तो beginners के लिए तू क्या recommend करेगा? Single body workout is more effective when you are advanced level athlete because you go heavier. That tire you down. But अगर beginner हो, you're not able to feel your muscles effectively poundage तुम set नहीं कर पा रहे हो, then it's better if you do chest, shoulder, tricep and next day upper body, in fact include biceps, upper body, lower body and third day you can do cardio. Strength बढ़ाओ, endurance बढ़ाओ, ठीक है, work on your flexibility and once you're good at it तब 2 मसल कर सकते हो। उसके बाद आप एडवांस लेवल एथलीट बनते हो, आप काफ़ी हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप सिंगल मसल वर्कआउट कर सकते हो। तो अभी आई एम इन अ ट्रायल फेज, हम लोग लेट्स ट्राई इट फॉर अ मंथ, शेयर विद यू आवर फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक। बट सो फार इट्स बीन लाइक वी कंप्लीटेड सेकंड डे टुडे एंड इट वाज रियली गुड। आज का क्या करम करा गरम करा नहीं था आज का कार्यक्रम करम करा ही तो कार्यक्रम नहीं, करम करा कुछ नहीं होता क्या? कार्यक्रम होता ये तो आज का कार्यक्रम के लिए इतना ही। ये डालेगा अभी ऐसे ये बंदर इवॉल्व हो गए बट हरकतें वही है हमारी। टॉक अबाउट योरसेल्फ बिच प्लीज। तो आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। ये नहीं दूंगा। So guys, that'll be all for today's video. Do like, share and subscribe to our channel for more. वीडियो गेम खेल रहा है। Do like, share, subscribe. जितना प्यार मिला है हमें, we really did expect this much. Stay tuned for more. Signing out.